Hello everyone. So with today's session, we are going to discuss about the brief theory on accounting of share capital transaction. We are going to discuss in both the language Hindi and English to help both aspirants. So with today's session, we will be discussing a theoretical portion. I'll going to highlight something brief about what you already learned in your class 11th and 12th or in your graduation part. We just try to recapitulate so that it helpful during solving the numerical. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन से हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन के थ्योरी पोर्शन को जो है थोड़ा सा ब्रीफ हाईलाइट करेंगे। जो आपने ऑलरेडी क्लास 11 12 और ग्रेजुएशन में कवर किया है उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं और हम जो जब न्यूमेरिकल करने लगे, क्योंकि मैं आपको बार बार ये समझाती हूँ कि न्यूमेरिकल करने से पहले थ्योरी का कमांड होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज सेशन फॉर द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल transactions, and we are going to discuss few important things regarding this. So what is all about the share capital transaction? It's all about the study of companies. So there are two types of company, a private company or a public company. So I will just keep on highlighting so that you can just recall. Okay. Okay, so a public company and a private company, but these public company or a private company, there is a differentiation for raising the capital. Why? What is capital? Means they need some money to do the business. So a private company which need to be registered under the Companies Act 2013 and have to comply with some of the regulations. These private limited company issue shares informally by personal contact with the directors and investors. It cannot invite to the public to buy its shares. But a public limited company, okay, so in case of a public limited company, the company is totally free to invite the public to buy its shares. So I hope you have learned recently past, and if you are going through a newspaper, a lot of IPOs are going on, initial public offering. So it's all about before, like those, that's all about the when the private company is now getting into the public limited company and they're inviting to the public to buy their shares. So it's issue the prospectus and take the help of underwriters in order to sell the this kind of shares. So I hope you can recall now quickly what is a private company and what is all about the public limited company. And these companies issue the what shares to raise the capital. How they are raising the capital? That means I'm just connecting you dot because I want you to recall small point and it fetch you a good marks in your answer writing. So what it is? These company, okay, these company need something. What is called? They need some capital. They need some money. Obviously, they need a money to run the business. Okay. So when they were private company, what they are doing, they have some their internal members, they contribute from their like angel investors also. Okay, and what they else do, they have some co-linked people they bring up from their business home house. So that can be a clause when they are private. But what if they have decided not to go to the public? So if they have decided to go to the public, now they can issue to the public to raise the capital, to raise the capital from the public by the way of, what is a method? By the way of issue of shares. Okay, so I hope now you can gather the difference in the clause of private and public limited company. So this is all a brief idea I want to give in you that what is now if the company is raising issue. So there is a clauses as per the Companies Act 2013 which need to be complied by the companies. Okay, so let's give me a moment to conclude इन अदर लैंग्वेज. तो कंपनी में हमने देखा दो तरीके की कंपनीज होती है. मैं आपको बस ब्रीफ रिकॉल करूंगी. एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है. तो कंपनी को कई बार आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के वर्ड से भी सुनते हैं, तो ये प्राइवेट एंड पब्लिक पार्ट में होती है. और इन कंपनी, ये जो कंपनीज होती हैं ये अपना कैपिटल रेज करती हैं. कैसे? इशू करती हैं शेयर्स को. अब जो प्राइवेट कंपनी है, यानी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी,
वो इनफॉर्मल वे में शेयर को जो है इशू करती है, यानी पर्सनल कांटेक्ट में हो, कोई डायरेक्टर्स हो या एंजल इन्वेस्टर्स हो या कोई भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके थ्रू कैपिटल रेज कर दे। कैपिटल यानी भाई बिजनेस चलाना है तो पैसे तो कहीं से चाहिए, तो वो पैसे वहां से लाती हैं। आपने आजकल बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में सुना होगा भाई कि इसने इतने का फंड रेज किया, तो कैपिटल वो प्राइवेट लिंकिंग हो गई। तो उन्होंने फंड लिया एंड दे आर वर्किंग, क्योंकि काम करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए और उनके पास आइडिया है, पैसे नहीं है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। ठीक है, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसे आ गए, बट वो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? दे आर ओपन एंड फ्री टू इन्वाइट द पब्लिक। पब्लिक को बोलते हैं तुम मेरे शेयर्स ले लो, अभी मैं बताऊंगी आपको कि शेयर्स क्या होते हैं, तुम मेरे शेयर्स ले लो, और वो शेयर्स बाय करते हैं, इससे कंपनी को क्या मिलता है? कैपिटल मिलता है। तो कंपनी जो है प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है, अंडरराइटर की मदद लेती है और डिफरेंट मोड्स के थ्रू एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट 2013 की मदद से जो है ये अपने सारे प्रोसीजर्स को कवर अप करती हैं। ठीक है, तो हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया कि कंपनी कौन कौन सी है, कैसे लिंक्ड हो रही है, हमारे चैप्टर के डॉट्स कनेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला, कंपनी ने क्या बोला कि तुम मेरे शेयर्स ले लो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने, तुम मेरे शेयर्स ले लो और वो उस बेसिस पे मुझे कैपिटल दो। सो व्हाट इज ऑल अबाउट शेयर्स? सो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब क्लॉज 84। So I'm just giving you brief outline because most of the student, I know you people holding a books or you are reading through the words, but I want you to these points to be in your tips. Okay, no matter whichever books you are using, but at least these points. And if you are referring to the commerce achiever material, not a big deal, but if you are referring any other material, so these points to be in your hands. And few I'll just try to give you more value additions as compared to the books, because classes is all about the value addition. So section 2 subclause 84, and it is not mandatory to memorize the section. If you know, write it. If you don't know, please don't write the wrong. Okay, in case of wrong there will be a deduction, but in case of no writing there is no deduction nor additions. Okay, so section 2 subclause 84 of Companies Act 2013. So sorry, we are talking about the shares. Okay, so as per section 2 subclause 84 of the Companies Act 2013, share means a share in the a portion of shares in the share capital of the company and its stock. So it's a portion of shares in what? It's in share capital, in the share capital plus stock of the company. So it's a combination of both. That means if you are in shareholder and if you hold some individual part of your unit, okay, so you are holding some unit into the total share capital of a company. Okay, and shares, what are they? Are used to raise the capital of the company, and each shares have some kind of ownership which is offered for sale. So yes, a share represent a part portion of the share capital of the company. Okay, suppose there is a company who has a say share capital of 50 lakh. Okay, 50 lakh, and these 50 lakh are say 5 lakh shares of rupees 10 each. So in that case, if you being a shareholder and you purchased a 6,000 share, so now you are the owner of 6,000 shares, and out of those 6,000 shares the amount was rupees 10 each. So rupees 60,000 is the share capital of the company in which you have contributed. Now you have 6,000 shares and you given the capital 60,000 to that particular company because the face value was rupees 10 each. I hope it's clear. Okay, so the share of the company can, yes, it's a movable, you can sell it anytime, you can transfer it. Okay, but it is all subject to the article of association of the company OAO. Okay, so when we talk about the nominal value of these shares, the face value of the shares which is at the par value of the shares. So I gave you a brief idea about what is share. I already gave you the brief idea about the company and why and what is calling with this, because I want you people to connect the dot why this chapter is in examination and how you have to connect the basic understanding and towards the numerical. Because if you have a clear thought of the theory paper,
You can just easy way to connect your dots. Okay, so give a moment to conclude in other language. Shares का मतलब क्या होता है कि आपने कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 2 सब क्लॉज 84 के अंदर इन्होंने बोला कि शेयर क्या है, शेयर यानी एक शेयर आपने एक होल्ड किया हुआ है कंपनी के शेयर कैपिटल और स्टॉक के अंदर, ठीक है, दोनों का कंबाइन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है, शेयर प्लस शेयर कैपिटल प्लस स्टॉक। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो शेयर्स हैं अगर आप देखें तो आपका एक इंडिविजुअल पोर्शन का पार्ट है जो कि कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल में पोर्शन लगता है, आप इसके ओनर हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शेयर कैपिटल का। एग्जाम्पल लीजिए कि कंपनी के पास कंपनी ने 5 लाख शेयर्स इशू किए थे और उनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन आपने 6000 शेयर्स उनके बाय किए, तो 6000 शेयर्स बाय किए यानी आपने कंपनी को कैपिटल कितना दिया, 60,000 रुपए, यानी 6000 आपके शेयर इंटू फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से आपने 60,000 के लिए, यानी आपने कंपनी को 60,000 दिए और कंपनी ने आपको 6000 शेयर्स दे दिए। पहले के शेयर वारंट फॉर्म में रहता था, अभी डिजिटल हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो 60,000 व्हाट यू हैव डिड, आपने क्या किया, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो ये आपका एक पोर्शन हो गया ओनरशिप का, हिंदी किसमें, शेयर कैपिटल में कंपनी के। ठीक है, तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके सारे जो रिस्ट्रिक्शंस एंड क्राइटेरियाज हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के अकॉर्डिंग मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी शेयर्स हैं उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है, जो फेस वैल्यू होती है, वो पार वैल्यू होती है शेयर्स की। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया बता दिया, ये सब आप क्लास 11th-12th में आई बिलीव बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, मैं बस यहाँ पे आपको रिकनेक्ट कर रही हूँ डॉट्स के साथ। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेयर कैपिटल। Okay, so I'm just marking the point so that it's would be helpful for you to recall even in your examination and write accordingly what you have learned in this class. So share capital, I already told you that share capital is what the company is raising from the public as an investors. So company is raising its capital by way of issue of shares to finance and to carry out its own business. Okay, so there is a documents, important documents, memorandum of association and article of association. So the memorandum of association, which lays down an important foundation of the company, so it's mentioned the amount of capital with which the company decide to go with the registration procedure and number of the shares into which it is decided to divide. So it is the basis of the it can be, you can say that it's a capital structure procedure of the company. So the total capital, the total capital which the company decided to raise as a finance, so it is divided into a shares and then it is called a share capital. Okay, so give me a moment to conclude in the other language. ठीक है, तो कंपनी ये शेयर कैपिटल क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई कंपनी जो है अपने कैपिटल को जो है कैपिटल लाने के लिए क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। क्यों, उन्हें फाइनेंस चाहिए, क्यों चाहिए, अपना बिजनेस कर सकें ताकि वो। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है ये सारे इन्फॉर्मेशन दी रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन डॉक्यूमेंट रहता है ये कंपनी का, जहाँ पे इसमें मेंशन होता है कि कितनी कैपिटल होगी। ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ कैपिटल से कंपनी जो है रजिस्टर हो रही है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, ठीक है, कैसे वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मेमोरेंडम में ये भी मेंशन होगा कि ये एक तरीके से बेस है, कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा कंपनी का बताएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल कैपिटल है ना कंपनी का, जो छोटे छोटे भागों में बट रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शेयर्स, एंड जो टोटल अमाउंट होगी वो होगी शेयर कैपिटल। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सो ये द मोस्ट important thing is about the equity shares and the preference shares, and I hope you people learned a lot in your class 11-12 about these capital. ठीक है, so equity shares and preference shares, and then preference shares can be divided is on the various basis, on the basis of dividend, say on the basis of participation, okay, on the basis of convertibility. Okay, so on the basis of dividend, yes, hope you remember cumulative, okay, cumulative preference shares, and on the basis of non-cumulative preference shares. I'm writing shortcut, okay, and in the case of participation, it's a participative and non-participating.
participating and non-participating. In case of convertible, yes, it's again a convertible preference shares and non-convertible. Okay, so these are the kinds of preference share capital. Okay, so these the share capital which the company issues to raise the finance and to run the business. So this is the share capital of the company which is limited by its shares and can be of two types. It can be of, as per Companies Act 2013, into the equity shares and preference shares. Okay, सो आपके जो शेयर कैपिटल हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जो कंपनी का शेयर कैपिटल है और कंपनी जो है वो शेयर्स से लिमिटेड है, तो उसके दो तरीके के शेयर होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो है वो तीन बेसिस पे आपके डिवाइड हो जाते हैं। पहले डिविडेंड के बेसिस पे जो डिवाइड होंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। फिर पार्टिसिपेशन के बेसिस पे जो डिवाइड होंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फिर कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे फिर जो डिवाइड होंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो इक्विटी, अब what I believe is you people are very well aware, तो मैं I just giving a quick recap of equity share capital। क्या होते हैं कि जो कंपनी के शेयर्स हैं, equity share capital it's about the companies which is limited by shares, so it does not come under the preference share capital। So equity share capital who has with the voting rights, yes, and they have a differential right regarding the dividends and the votings and various other rights। And preference shares means the name itself speaks louder, preferential rights. That means with reference to a company which is limited by shares, refers to the share capital that is which carry a preferential right over the equity shares holder. So either it's related to the payment of dividend, or at the time of winding up there is a payment regarding repayments in case, or the amount on the cases of deemed to be paid up. In that case, in every scenario it's like preference shareholders or preference shares carrying a preferential right as compared to the equity shares holder. So yes, there is a difference between two, because if we talk about the refund of capital, so equity holders are on paid after the preference shares and they are count on the end. However, preference shares holder on the winding up, they giving a opportunity before the equity shareholders but after the your debenture holders. And in case of dividend, yes, equity shares, in case of equity shares, dividend is paid on equity shares after paying to the preference shares, and hence in case of preference shares they are given a before making payment to the equity shares holder. Rate of dividend, yes, there is no fixed rate of dividend for equity shareholders because it is completely decided by the board of director every year. And however, in case of preferential, if you can see 10% preference share or 14% preference share, so there is a fixed rate of dividend in case on the face of that particular preference shares for the preference shareholders. Right to vote. So in case of equity shares, they have a right to vote in the meeting of the shareholders and they can elect the director of the managing company. However, in the normal course, preference shareholders do not enjoy any voting right in the meeting of the shareholders, but they may have some right to vote on the very extreme and special circumstances. On the redemption, preference shareholders have a preferential right, and in case of equity shareholders, no, they are only at the end, means equity shares are not redeemable. However, company may buy back from them, okay, and equity as per the requirement and terms and conditions of Companies Act 2013. So we will also going to learn about the buyback. I hope you recall that it's in your syllabus, the buyback. That means the equity shares are not redeemable, but a company can take a buyback, company can do the procedures with the buyback of the equity shares as per the requirement of Companies Act 2013. So I draw a brief difference between the equity shares and preference share. I know you people learned everything in your undergraduate classes and all, but I just want to recall you the every facts you already learned in your past sessions. ओके, सो हमने अभी आप पढ़ा कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं क्विक हाईलाइट करूंगी, आपने मीनिंग समझी कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट है, प्रेफरेंशियल्स हैं, और इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं। ये एज पर कंपनीज एक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर रिफंड की बात करें, रिफंड ऑफ कैपिटल,
ठीक है। रिफंड की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वेंडिंग जब कंपनी बंद हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पे किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल से, ठीक है, और उनका प्रेफरेंस रहता है पहले पाने का। और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल एंड में मिलता है उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स को मीट आउट करने के बाद। अब टाइप्स की बात करें तो इक्विटी के तो टाइप्स नहीं होते, बट प्रेफरेंस के हमने ऑलरेडी टाइप्स को डिस्कस किया, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। उसके बाद हमने राइट ओवर डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर राइट। ऑब्वियसली जब डिविडेंड के ऊपर राइट की बात आती है तो इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद ही उनको पेमेंट किया जाता है, बट डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट की जाती है। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर का कोई फिक्स नहीं है, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हर साल और कुछ समय बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में डिसाइड करते हैं और उसी रेट से डिविडेंड पे किया जाता है। बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो उनका फिक्स रेट है जो कि आप उनके फेस पे देखते हैं। लाइक आपने कई बार देखा होगा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये 12, 10, 8% ये क्या है, ये रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है। आपको अगर एग्जाम्पल याद आएगा एग्जाम में तो आप उसका मेंशन करेंगे, ठीक है। वोटिंग राइट, ओके। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में यस वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वोट कर सकते हैं और इवन डायरेक्टर्स को भी डायरेक्टर्स का भी चयन कर सकते हैं, यानी उन्हें इलेक्ट कर सकते हैं ताकि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी रहे। लेकिन यही अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो होल्ड करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नॉर्मल कोर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, बट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उन्हें टेकन केयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिडम्पशन, रिडम्पशन यानी जब पैसे देने हैं, सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है और या कंपनी का कोई सिचुएशन है या, तो रिडम्पशन के केस में प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पेमेंट की होती है और इक्विटी शेयर्स के केस में रिडम्पशन नहीं होता। उसके केस में कंपनी बायबैक करती है, अपने ही शेयर्स को बायबैक करती है। तो हम जब बायबैक का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके हम सारे प्रोसीजर समझेंगे, तो वहां पे आपने डॉट कनेक्ट करना है कि रिडम्पशन वाले टाइम में मैम ने मुझे बायबैक का कॉन्सेप्ट बताया था कि कंपनी जो है बायबैक करती है। क्लियर? 8 पॉइंट यू कैन आप ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। तो you get difference between equity shares and preference shares. Now I just want to draw your attention regarding this kind of quickly I want to draw what is a cumulative and non-cumulative preference shares. So cumulative preference shares, these are those kind of preference shareholder who are entitled to receive the arrear of dividend if there is any arrear in the past times. So they are right to receive the arrear of dividend before any payment to the equity shares. So I'm just writing in a brief so that it's very easy for you to revise. Right to receive arrears. Hope it's okay. Dividend you can link. But in case of non-cumulative, if any shareholder who opted for the preference share capital but they are non-cumulative preference shareholders, so in that case they don't have any right to receive arrears. So if no dividend is declared, suppose in any of the year due to any of the reason, suppose in current year company is not having a good scenario and they didn't declared any dividend, okay, due to XYZ reason, so they are not going to get anything, nor they can claim about it, neither today neither in future. So they have no right. So non-cumulative preference shares have no right. So no right in arrears. Okay, hope you recall. Okay, so next is a participating and non-participating. So participating preference shares, it's they means in additions to the fixed dividend, okay, they carry a right to participate in profit. Okay, so dividend, that is obviously they have and they have right to participate in profit. Okay, so they have a right to participate in surplus if a company has any kind of surplus for profit after providing dividend at to the equity shareholder. Suppose a company have a profit, company pay to preference shareholders and pay to the equity shareholder, and still company left with some profit. Then equity shareholder with the participating right, they are eligible for that. But however, in case of non-participating preference shares, so they only going to enjoy the fixed rate of dividend every year. So they have no right to participation in surplus profit. So fixed rate of dividend only.
Hope you recall. Okay, only the fixed rate of dividend, nothing on the surplus profit. Last is convertible and non-convertible. So convertible preference shares, these are those with they have a right also, and they have an option given to an options to convert it into an equity shares. However, in case of a non-convertible preference shareholders, so they do not have any right, nor they have given any options to convert into a equity shares. So I hope this much is clear. So give me a moment to conclude in the other language, and then we move ahead to learn a lot of very important and relevant theories of this chapter. So हमने अभी समझा कि भाई बहुत तरीके से हमने प्रेफरेंस शेयर्स को समझा. सबसे पहले हमने समझा कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव को. तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर क्या होते हैं? ये वो होल्डर होते हैं कि भाई किसी साल में ना कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ या कोई भी वजह हो गई, किसी भी रीजंस की वजह से कंपनी ने ना उस साल डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया. तो जब वो नेक्स्ट ईयर आती है और मानिए कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, तो कम्युलेटिव वाले बोलते हैं भाई जो पुराना छोड़ा है उसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, कम्युलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं. ऐसे आपने याद भी कर लेना. कम्युलेट आपने कर दिया, क्यों? क्योंकि पुराना था ना, आपने दिया नहीं, आपने क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया. लेकिन आज आपके पास प्रॉफिट है, आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप क्या कर लिए? सारा कम्युलेट कर लिए. पुराना भी दो तो कैसे छोड़ूंगा. ठीक है. सो दैट इज अ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुए भाई? ये ऐसे शेयर्स हुए जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट नहीं कि अरियर मांगे, क्योंकि ये नॉन कम्युलेटिव, यानी पुराने से मतलब नहीं. आज जितना प्रॉफिट हुआ उतना दो. इन्होंने पुराने की डिमांड करने का कोई राइट नहीं है. ये होते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. और मेरा ये मानना है आज के सेशन के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अगर नहीं भी क्लियर थे ना, वो क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे. बाद के लिए मत छोड़ना, कोर्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग यानी किस चीज़ में पार्टिसिपेशन? वैसे तो कर ही रहे हैं, आपने तो बोला वोटिंग में करेंगे नहीं. ये पार्टिसिपेशन की बात है सरप्लस प्रॉफिट के रिगार्डिंग, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर कोई पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके पास, ठीक है, तो उन्हें फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिलेगा ही. लेकिन अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट यानी ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है. उसके बाद जो सरप्लस बचता है ना, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट हो जाता है, जो कि पार्टिसिपेटिंग, यानी कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट के लिए हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है. यही अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, तो इस केस में इनके पास कोई राइट नहीं होता कि ये सरप्लस मांगे. इनको केवल फिक्स रेट जो इनका डिविडेंड का फिक्स हुआ है वही उन्हें हर साल मिलेगा. कोई सरप्लस प्रॉफिट से इनका कोई नाता नहीं होता. लास्ट है हमारा कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. नाम ही बोल रहा है कन्वर्ट होना, यानी ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको राइट भी है, उनका खुद का अधिकार भी है, और उन्हें ऑप्शन भी दिया जाएगा कि आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. लेकिन नॉन कन्वर्टेबल की बात है जिनके पास ना ही राइट है और ना ही उन्हें कोई ऑप्शन दिया जा रहा है. मैं दोनों बात बोल रही हूँ, उनका खुद का भी राइट नहीं है और कंपनी ऑप्शन भी नहीं देगी. सो ना ही राइट है और ना ही कोई ऑप्शन है कि वो जो है उसको प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकें. ठीक है. सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ ब्रीफ अबाउट दीज टाइप ऑफ क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस shares. ठीक है. So now I'm going to discuss something more about the disclosure on the share capital. Okay, that is the share capital which is invested with the aim of generating a lot of revenue for the purpose of using the business to run the business. So capital which is raised from public and people who contributed to the share capital, these are known as shareholders. So hope you know these are person who holds the equity shares, they are called equity shareholder. Person who holds the preference shares, they are called preference shareholders. Okay, so these are the major points. Share capital, fourth one, and fifth one. Okay, so fifth one is shareholders. Okay, we learned about this. And in case of share capital, we learn about the kinds of share capital and every detail of share capital. Okay, so these shareholders, they carry this capital. So we'll discuss about the different parts or disclosure requirement of share capital. Share capital disclosure. So first one is called authorized capital. Authorized capital. So authorized capital, these are also called as a nominal capital or the registered, which is registered with the as per the requirement of Companies Act. So it's a nominal or a registered capital, or a authorized capital is a maximum amount of capital which a company can issue. Okay, so this is disclosed in memorandum of association, it is disclosed in MOA, and it's a maximum value.
So company cannot go beyond this maximum value which is mentioned in an author, because I am preparing you for interview also. So do not think it's irrelevant. Okay, I want to prepare you till your last phase of your this qualification. Okay, so authorized capital. Next is issued capital. Issued capital. Capital means it is one of the part of, it is the part of authorized capital. The issued capital is a part of authorized capital which is offered to the public. Okay, offered to public for subscription. That means you can buy. Okay, so first is authorized, means an authority. You have authority, you have authorized for capital. This is also known as a registered capital or a nominal capital, the maximum value which is mentioned in MOA. The issued capital is a part of authorized capital and it is issued to the public for subscription. I want to help you to memorize here only some brief facts. Okay, next is called up capital. Okay, called up, that means you called somebody. Okay, so called up capital is the amount of, it is a part of nominal capital or the authorized capital that has been called up by the company. ठीक है, called up by the company for whom, to the shareholder, please pay this amount and complete it. Okay, and paid up capital is the part of called up. So it's a part of your nominal value, or you can say authorized capital or a nominal value of shares. Nominal value of shares. Okay, so that is called up by the company as the name specified. And next is your paid up capital. Paid up capital. So paid up capital is a part of called up capital. Part of called up capital which is not yet called, means which is due from the side of shareholders to be paid for. Okay, means company didn't call them to pay it as of now. Okay, so that's a due portion. So give me a moment to conclude in other language. तो अपनी जो शेयर कैपिटल है हम डिस्क्लोजर कर दें. सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल है जिसको हम नॉमिनल और रजिस्टर्ड वैल्यू भी बोलते हैं. ये मैक्सिमम अमाउंट होती है कंपनी की जो एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की होती है. ठीक है, नेक्स्ट है इशूड कैपिटल. इशू यानी जो इशू कर रही है पब्लिक को. ऑथराइज यानी जो जिसके लिए अप्रूवल मिला हो, ऑथराइजेशन मिला हो, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जानी हो, जो नॉमिनल हो. इशूड क्या है, जो ऑथराइज्ड हो चुकी है उसका पोर्शन जो है जो पब्लिक को इशू किया जा रहा है कि भाई अब तुम इसे बाय कर सकते हो, इसे सब्सक्राइब कर सकते हो. कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल ये जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की, जिसे कंपनी ने बोला कि भाई 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू, तो बोला कि भाई चलो 5 रुपये के हिसाब से तुम पे कर दो. तुम कौन, शेयर होल्डर को बोला कंपनी ने. ठीक है, तो ये कॉल्ड कर लिया, बुला लिया कि पे कर दो. और पेड अप कैपिटल क्या हो गए, ये वो कैपिटल है किसकी, कॉल्ड अप कैपिटल की, जिसे भाई कंपनी ने शेयर होल्डर को बोल दिया कि तुम पे कर दो. और पेड अप कैपिटल मींस जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया. ठीक है, अनकॉल्ड अप क्या होता है, जो पे जिसको अभी कंपनी ने कॉल्ड नहीं किया, ऐसे अनपेड अप कैपिटल हो गए. ठीक है, सो how is the disclosure requirement? Its disclosure requirement is goes as per the your equity shares, and under the liability sides you have equity and liability, shareholders fund and the share capital. And then we can disclose it as into the different parts of authorized capitals and your issued and subscribed capital. Generally issued and subscribed capital goes hand in hand. Okay, and subscribed capital means a part of capital for the time being that is subscribed, already been subscribed by the members. So it's after some time after issued, and sometime it's going together. So you can do also this one thing. 3, we can do subscribed capital. Sorry, one second, give me a moment. Okay, subscribed. Sometimes these go separately, sometimes go hand in hand. But if nothing is mentioned, show it separately. Okay, issued means company issued to the public for subscription. Subscribed means which the public subscribed it. Okay, paid up means then we have paid up capital and called up capital. So sometimes these all to go this and this go hand in hand. Okay, so I'm marking them 3. Is it okay? And this is 4.
Okay, so there is an uncalled capital, that means a subscribed capital which is not yet called up by the company or board of director, we can say that. And there is last one important thing is a reserve capital, that means a company which made a special resolution that some portion of this share capital they have, which they already called from the public, shall not be capable of being called up except on the some on the special circumstances they will not called up, and that uncalled portion they keep something for the extreme cases, they want to reserve those capital. Okay, reserve capital. And one more thing, I also talked about your uncalled capital, right? Here I am writing, just it's recall in your brain, just to recall. Okay, so give me a moment to conclude. तो next है आपका uncalled capital. Uncalled capital क्या था, मैंने आपको बताया जो subscribed capital है जिसे अभी कॉल नहीं किया गया, कंपनी ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी कॉल नहीं किया. रिजर्व कैपिटल नाम ही बता रहा है, रिजर्व करके रखना है. तो कंपनी अगर लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ये डिटरमाइन करते हैं कि शेयर कैपिटल का एक पोर्शन है ना, उसे कॉल्ड अप नहीं करना है जनरली, उसे एक ऐसे पर्टिकुलर कोई सिचुएशन आएगी तब करेंगे. ठीक है, चाहे वो विंडिंग अप हो या कोई भी सिचुएशन हो वाउंड अप के टाइम पे. तो ये जो अनकॉल्ड पोर्शन होता है, ठीक है, उसे बचाए रखने के लिए, एक सिचुएशन के लिए रिजर्व रखने के लिए उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल. ठीक है, so let's go for the disclosure. I'm going to share the disclosure requirement. Okay, so we have a balance sheet. I'm just showing a brief format. Okay, hope it's okay with you. Okay, so there is a requirement of a balance sheet, so you have to prepare like this particulars. Okay, then you have share capital. Okay, under the share capital you have authorized capital. Again, it depends on equity or preference shares, you divide each. Issued capital, again it's on equity shares or preference shares, divide each. Subscribed or capital, it can be divided into subscribed or fully paid, and again it is divided on between the equity shares and preference shares. Okay, so it is divided into subscribed and fully paid up, which means a subscribed and fully paid by the shareholders, fully paid up. And second is which is not fully paid up, subscribed but not fully paid up, and not fully paid up. Each one is divided into equity shares and preference shares as per the demand of question. Okay, so on the edge, if you calculate this, and here it's, so suppose in case of a arrear, that means an shareholder stop paying, they fail to pay. In that case, what you have to do is you have to reduce the arrear from the subscribed capital less calls and arrear. I'll discuss in very detail, okay, in near future, if you not recall what is arrear. Okay, if any, you will reduce the calls in arrear, and then we get the balance, and then we add if any amount company forfeited shares, if any forfeited. I'll explain that also in near future. Okay, if any. So now you'll get the total amount. Okay, this can be the easily format, you can refer. So ये आपका फॉर्मेट रहेगा. और जो है लाइबिलिटी साइड में हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर्स फंड, एंड देन उसके अंदर में हम मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल.
जिसको डिवाइड करेंगे पहले हम ऑथराइज्ड कैपिटल को, फिर हमारा हो जाएगा इश्यूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में भी जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है, ये सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप है। इसको कई जगहों पे सब्सक्राइब्ड को अलग दिखाते हैं और जो पेड अप वाले होते हैं ना, उसे पेड अप कैपिटल में, जो फुली पेड अप नहीं है उनको सेपरेटली दिखाते हैं। तो जो आपका सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप होगा, उसमें अगर कोई अरियर यानी कोई जो है शेयर होल्डर छोड़ के चले जाते हैं, अरियर कर देते हैं, तो उसे हम रिड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे और अरियर क्या होते हैं उसे हम फ्यूचर सेशंस में कवर अप करेंगे। और ऐड करेंगे हम फॉरफिटेड शेयर्स को, ठीक है, और नेट अमाउंट हमारी जो है लायबिलिटी साइड में आ जाएगी शेयर कैपिटल की। तो ऐड क्यों कर रहे हैं फॉरफिटेड, इसके भी कॉन्सेप्ट्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कवर अप करेंगे हमारे फ्यूचर सेशंस में। तो एक लास्ट पॉइंट इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले, ठीक है, कंपनी जो है the company can issue these shares earlier on the form of cash and for consideration other than cash. So if the company decided to issue these shares for under consideration for cash, that means they can, let me check the time duration. Okay, so company can issue shares. Okay, so there are ways: in cash and other than cash. Okay, that is consideration other than cash. So if the company decided to issue these shares for under consideration for cash, they can either issue at par or at premium. And now I'm going to discuss very important, at discount in exceptional cases. Why I mention this? Because there is a changes in Companies Act, and we'll discuss while discussing about the discount and premium also. So earlier discount was allowed, that company can issue shares in discount, but now it has restricted, and in very very extreme cases company can issue the share discount. Otherwise the general is no, company is not allowed to issue these shares on discount, at discount, ठीक है। So हम नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट देखेंगे कि कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू कर सकती है वो दो तरीके से करती है, या तो कैश में या अदर देन कैश में। जो कंसिडरेशन है वो अदर देन कैश में होता है। तो अगर कोई जो कंपनी शेयर इशू कर रही है वो कंसिडरेशन कैश में ले रही है, तो उसे या तो वो पार पे इशू करती है, या प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और साथ ही साथ जनरल एंट्रीज को भी संग संग में समझेंगे कि क्या है। तो हमने लास्टली ये देखा कि भाई ये सारे इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं कंपनी के, ठीक है, और हमने देखा कि कंपनी जो है वो शेयर्स को कैश में, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे कर सकते हैं, बट डिस्काउंट बहुत ही एक्सेप्शनल है, जनरली अलाउड नहीं है। अब कंपनीज एक्ट में ये काफ़ी बड़ा चेंज आया है। तो हम नेक्स्ट सेशन में शेयर पेमेंट्स जो इंस्टॉलमेंट में होती है, और पार की एंट्रीज को और प्रीमियम को, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। सो थ्योरी को ऐसे जाया ना जाने दें, क्योंकि मैं आपको इंटरव्यू तक के लिए तैयार कर रही हूँ। एक बार सुन लेंगे, माइंड में सेटल हो जाएगा, ये डॉट्स का PDF मिल जाएगा, बस नेक्स्ट टाइम उसी से रिवीजन कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। सो आई होप दिस मच इज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लॉट अबाउट द बेसिक्स विच यू ऑलरेडी कवर्ड इन योर 11th 12th एंड ग्रेजुएशन पर्पस। सो काइंडली कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।